Okay, let us start. So I'm sharing my screen. Anyone just quickly confirm if you can see the SQL Server setup. Hello, am I audible? Yes. Yes, okay. Okay, so I think you all were struggling to get the setup. So I have the setup for 2019, but the files are very huge. It is like 1.2 GB. There is again 1 GB. So I was not able to pass it on the this what we say the WhatsApp group. Let me see if I can upload it on the LMS, the portal where we will be uploading the assignments and all those documents. So let me see if I'm able to upload it there. Otherwise, we will upgrade to 2022. Fine. Now, we'll just go with the theoretical part today so that we understand what exactly the tool is about and how we are going to do the practical sessions. So I'm just picking up my Excel sheet here. So till the time my Excel sheet is getting loaded, I just want to know quickly from you. There are a couple of candidates which I know already because they have taken different courses from me in Radical. But then there are many whom I do not know. So just give me a quick introduction, your background, and maybe if your experience, what is your total experience, and then I'll come up with my introduction. So I think, yes, Ashish, if you can start. Ashish, you need to unmute yourself. Hello, Ashish, can you hear me? Okay, let's move to Ashwini. Ma'am, it's Ashwin. Okay, Ashwin, sorry. Yes, Ashwin, please go ahead. Hello. Yes, Ashwin, we can hear you. Yes, ma'am. So, do you have any background? I mean, any experience or what is your background? So that I understand, like, how basic we need to go with all these analytical tools. So that's what I'm trying to understand from each one of you. Yes, Ashwin. Ma'am, I'm complete my graduation in 2017 in BCA, Okay. Bachelor of Computer Application. Mm-hmm. After that, I work in outbound process in Hexaware in Nagpur, Okay. Mm-hmm. and then I preparing for government exam. Okay, so currently you're preparing for this exam, and then you thought of doing data analytics. Okay, for Yes. upskilling, right? So basically, you're doing it for upskilling. Okay, okay, Okay. Ashwin, thank you. Bharat Deshmukh. Bharat, you're there. Okay, Pranjal. Yes. Good Yes, morning. Pranjal. Hi, good morning. My name is Pranjal Shevalkar. Mm-hmm. I am currently working in Huddle as a data analyst, level 2. Okay. Mm-hmm. So for the past 2 years, I've been working in Huddle, Okay. and I need to upskill my skills. So I want to do a full-fledged course in data analytics so that I can switch to other companies. Okay. So, as a part of data analysis, were you working on Excel databases earlier? Or it has been just like more of a project-related work. What was your? Um, More of a project related, Mm-hmm. but not really in data analytics because Okay. Huddle itself has their own softwares which run the datas and Correct. Correct. um, Mm-hmm. sort Inter. of uh, Correct. Okay. So then again, this platform is new to you. Oh, yes, okay. Fine. Okay. Got your not point. completely, But then you but aware how the pattern goes. Um. yes. Okay. Okay. Yes, Pranjal. Thank you. Then we have Rekha Mahajan. Yes, ma'am. Hello. Good morning, Rekha. So Hi, yes. just throw a background so that I understand. My name is Rekha Majan. Mm-hmm. I completed graduation Okay. Recently, recently and 5 year before. 5 years before.
हाँ रेखा चलेगा, आप मराठी में बोलो, मुझे आता है मराठी, वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और सेशंस को मैं क्या करूंगी, दोनों इंग्लिश हिंदी दोनों में करूंगी, मोस्टली इंग्लिश ही रहेगा, क्योंकि आप जब इंटरव्यूज के लिए जाते हो, डेटा एनालिस्ट का प्लेटफॉर्म है, इट इज मोर अबाउट इंग्लिश। सो कुछ कंसेप्ट मुझे ऐसा लगता है या आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, हिंदी में करना चाहिए, तो ठीक है, हिंदी मराठी आई कैन कन्वर्ट, बट मोस्टली विल गो इंग्लिश, और नॉर्मल इंग्लिश ही रहेगा। क्योंकि क्या होता है ना, व्हेन यू गो फॉर इंटरव्यूज, तो वहां पे थोड़ा जरूरत रहेगा, बिकॉज टेक्निकल टर्म जो है कभी कभी वो हिंदी में नहीं कन्वर्ट कर पाते, बट आई मेक श्योर कि दोनों लैंग्वेज में होता रहे हमारा, ठीक है। अभी अभी बोलो रेखा। सो 5 years मराठी में। ग्रेजुएशन, ओके, आफ्टर दैट? अभी फ्रेशर्स हूँ, घर पे ही रहती हूँ मैं। अच्छा अच्छा, सो यू वांट टू स्टार्ट लुकिंग फॉर जॉब्स, ओके। आणि मी बेसिक कंप्लीट केलेली आहे. Acha, okay, okay. That's good. That's good. I mean, you're thinking of like coming into data platform once again. So that is a big thing. मतलब सोच के आना 5-6 years के आपका graduation हुआ है, still thinking of coming into job. It's a good thing. So yes, Rekha. So let's see how we can proceed ahead with this batch and making more easier for you, because I think you are like कि अपना new है domain. So let's see. We'll make it very basic. Okay, Rekha. Thank you. Yes. Shweta, you're there? Yes, ma'am. Good morning. Good morning. Yes, ma'am. I have completed my master's in pharmacy. I'm basically from healthcare domain, Okay. and I have experience of around 4 years Okay. in healthcare as Hmm. clinical research associate, and I'm completely new to this domain. Okay. So again, we are new, but you have 4 years Yes. experience with healthcare. Okay, that's Yes. good, Shweta. Okay, Shweta, thank you so much. Thank you. Okay. Yes, yes. So Ashish and Akash, you are remaining in Bharat. In case you would like to speak, you can unmute yourself and you can convey me your thoughts. This was just to understand the basics. Now coming to my point, so myself Ruchika Rathi, I have 13 years of IT experience, where I have been working with Radical since last 5 years as a trainer. Not only with Radical, I am working with CDAC, multiple universities. I go to corporate trainings also. So now whenever I have a corporate training, luckily this week I am doing a second half of corporate training. But sometime when I have a corporate training in the morning, so thoda batch ka time shift hoga. Not for the entire month. 2-3 दिन ऐसे हो सकता है. We'll switch the time. And that's how, and it's like since all 13 years मैंने पूरा BI में ही काम किया है. So BI means business intelligence, जो हमारा data analysis का platform है. So since the start I got placed to a campus. It was BI was new for me, just the way आपके लिए कैसे fresher है. So I can understand your point कि completely new था. Even after a year I feel like कि engineering में क्या किया और office में क्या करें. It's very different because subjects आप जो पढ़ते हो, there are more theoretical, practicality इतना होता नहीं है. Let's say whichever domain you go. So I don't know much about other domains, but I am an engineer student, so I know कि वहाँ पे भी चीजें हैं, but they are not that much practical जो IT companies में होता है. So ऐसा भी बोला जाता है कि IT companies are always 4 to 5 years ahead of your colleges, and that is the truth. So initially 1-2 years we got the training, फिर हमने काम किया, and that's how the roadmap has been. And then I've not only worked with Power BI. Currently, Power BI is the booming tool in the market. So we are converting the data into reports in Power BI. We have Tableau, we have ClickView. So ये तीनों tools hot tools है market में. Currently Power BI बहुत ज़्यादा boom में, because it's a kind of a non-technical tool. Anybody can learn it. उसके लिए कोई prerequisite नहीं चाहिए. And then there are many reporting tools which I've worked initially as a developer, and then now I'm a team lead in my project and handling 2 teams, and that is a roadmap. So now what is going to be a total plan of this data analytics batch? So I'm writing it here: data analytics, the entire course. So the hours are like 70 hours, और जिसमें जो 25 to 30 hours जो और pending है, that will be all about your projects, assignments, your difficulty solving. But the total practical sessions would be 65 to 70 hours. Now, what is the first application which we are going to start with is your SQL Server, which I know कि आपके पास installation नहीं है, but I'll help you with this. So SQL Server 2019 में इसलिए कल ग्रुप में बोल रही थी, because that is the one, ये वर्जन ऐसा है जो बहुत टाइम से चल रहा है, and it is like trial and tested. So latest one which we have is 2022. So usually companies में एकदम latest version use नहीं करते, because it's like recently आया है. You might not know कि कौन से features कैसे work करते हैं. कुछ features में issues हो सकते हैं. So we never go with the very latest, but let's see what should we go with, 2019 or 2022. Now the question which most of the freshers have here. So madam, if you're working on 2018, 2019, and now if we have the job requirement for 2022,
सो क्या होगा, हमें फिर से ट्रेनिंग करना पड़ेगा या फिर कुछ तो इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा. सो द पॉइंट हियर इज नॉट ओनली विद SQL सर्वर, आप किसी भी टूल्स की बात करते हो, सो दैट सॉफ्टवेयर हैव अ एबिलिटी, वो सॉफ्टवेयर के पास एक मतलब लॉन्चिंग वाला ये चीज होता है एवरी मंथ. जैसे पावर बीआई का हर प्रोडक्ट जो है हर मंथ नया आता है. So every month नया आना means there are some changes they make it, there are some upgradation they do, कुछ formulas, कुछ functions properly नहीं चलते. So that is how they come up with new versions every month. So this is only with Power BI. But talking with SQL Server, not every time, quarter में एक बार, year में एक बार, they come up with a new version. So the point here is, if we do 2019 and if we have the job requirement for 2022 or let's say 2021, will we be able to apply it? Yes, you will be able to apply it. So वर्जनिंग में चीज इतना ही होता है कि कुछ इम्प्रोवाइजेशन किया है, कुछ फंक्शंस ऐड किए हैं, कुछ टैब्स ऐड किए हैं, अगेन कुछ फॉर्मूला एक्सप्रेशंस हैज बीन अपडेटेड. दैट्स द ओनली थिंग. सो नोबडी विल टेल यू कि अगर आपने 2019 2021 पे वो ट्रेनिंग किया है, जॉब किया है, यू शुड नॉट बी वर्किंग विद 2022. जो भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट है, यू जस्ट नीड टू सी कि आपने वो भी कवर अप किए. That's the only thing. Okay. So SQL Server we are going to work, and then after that we are going to move to your Excel. So Excel is again going to be basic to advanced. सारे tools basic to advanced ही है. So SQL में भी और अलग अलग parts है. That is your PL SQL. So PL SQL is what we are not going to touch. PL SQL होता है और एक होता है T SQL, okay, transaction SQL, or PL SQL means your procedure languages. So when we are working as a data analyst, जैसे भी किसी ने बोला कि I want to switch jobs for data analyst. So in that cases also you don't need to learn your PL SQL. When you are trying to apply a job as a SQL developer admin, जैसे दो roles होते हैं, एक है SQL developer. So we are going to look into this application as a developer, right? So हर product में दो चीज होती है, developer and the admin. So this is again my admin developer. So developer means somebody who is going to write the codes, who is going to write the command and get the data outside. Admin means a person who is controlling everything. कितने लोगों को access मिला है, what people are able to review, what people are able to watch. So all this licensing कितनों को देना है, कितनों से licenses revoke करना है. So admin is equal to administrator. So we are going to focus on developer part. Now, somebody who is trying to apply a full-time job on a SQL server developer, okay? So in that cases, he needs to understand PL SQL also. But for the data analytics roadmap, इसके लिए आपको PL SQL का जरूरत नहीं है, because ये super advanced है and it is not needed for the roadmap of data analytics. And that is how हमारा TOC भी planned है. So we will be focusing on SQL Server 2019 or 2022 from the developers point of view. Then coming to Excel, so Excel we are going to do it from again basic to advanced. I know बहुत लोगों ने Excel use किया है, it's like a daily bread and butter. So we are going to make it basic to advanced function. Okay, that is how Excel will help you. Now once we are done with Excel, we would be moving forward to Power BI. Okay, so Power BI again, it's going to be completely basic to advanced course where we are going to create dashboards, assignments, projects, and everything. So after Power BI, then we would be moving last to Python. Okay, so Python we are going to cover just basic to intermediate. We are not going to be covering the advanced part, because Python is again very detailed tool. But again, as a part of data analytics tool, wherever I take the batches, not only with Radical, we always take Python as basic to intermediate. Now most of the time if you skip the Python, जैसे आपने suppose इन तीनों पे focus किया, after completing the entire course you feel like कि बहुत detail हो चुका है and I'm not getting the job on all the 4 technologies. So that's completely okay. You can pick up, आप इन दोनों का, इन तीनों को combine कर सकते हो. Let's say SQL Server, Excel, Power BI, you can look for a job of data analytics. If you like Python, तो आप Power BI, Python पे job ढूंढ लो. So ऐसा कोई requirement नहीं है कि data analyst के लिए upskilling करने के बाद you need to start looking job for all 4 of them. आप किसी दो पे pick up कर लो. So the way I said, you like SQL Server very good, आपको बहुत अच्छा लगा. You like the query, you like the logical thinking. You apply as a SQL Server developer. That's okay. You can apply only for Power BI, okay? But only for Power BI is not going to help you, because if you learn Power BI, you need to learn SQL Server. अब इसका reason क्यों है ऐसा? Because Power BI में क्या होता है? There are 100 plus sources. 100 plus sources means जैसे Power BI एक एप्लीकेशन है जिसमें हम अलग अलग जगह से डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं. आप एक्सेल का डेटा डाल दो Power BI में,
PDF डाल दो, आउटलुक का डाल दो, लिंक्डइन है, Amazon वेबसाइट से, so it can connect to all of this website, correct? So we will be doing it like connection to multiple places in Power BI, but when you go to real time Power BI के लिए SQL Server is not the prerequisite नहीं है, but if you go to real corporate, आपके पास SQL Server से ही डेटा आता है क्लाइंट का. Why? Because SQL Server में कैपेसिटी है वो 10 years, 15 years, बेसिकली जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिकल डेटा. It can store the data for many years, and that is why, because it can store the data for a very long duration, you can get that data into Power BI. अब Excel में क्या होता है? Excel has like a limitation of 10 lakh rows, which is equal to 1 million. Okay, so beyond this, Excel में कैपेसिटी नहीं है कि उसके आगे एक्सपांड करके वो डेटा हैंडल कर सके. नाउ इफ यू सी द रियल टाइम डेटा, द क्लाइंट्स डेटा, यूजर्स डेटा, वो हमेशा बहुत हैवी होते हैं. सो इतना हैवी डेटा एक्सेल होल्ड नहीं कर पाएगा, ना पीडीएफ कर पाता है, ना सीएसवी फाइल, विच इज योर कॉमा सेपरेटेड फाइल्स. So that is why we most of the time get the data from the client in SQL Server. Now SQL Server एक database है, ऐसे काफी सारे databases है हमारे पास में. Okay, so that is why if you want to learn Power BI, you can still learn it. You can still upskill yourself, but if you're trying to apply for job, then SQL Server is important. Okay, so that is how the roadmap is going to be: SQL Server, then Excel, then Power BI, and then Python. Okay, any questions we have till here? No, ma'am. No? Okay, fine. Okay, then let's start with. अभी मैं थोड़ा हिंदी में भी बोलूंगी. Sometimes I feel like कि मराठी भी बोलना, I'll do it. But one thing I'll tell everybody, हर कंसेप्ट के बाद मैं आपको बार बार नहीं पूछ सकती हूँ, समझ में आया नहीं आया, feel free. You are going to be there with me for almost 2.5 months. दिस इज द जर्नी. 2-2.5 महीने हम लोग साथ में रहने वाले. फील फ्री, जितने क्वेश्चन है आप पूछो. बेसिक क्वेश्चन है, जो लोग बिल्कुल आईटी से न्यू है, जस्ट ग्रेजुएटेड है, मेक श्योर यू आस्क लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस. इन केस अगर ऐसे लगता है कि आई डू नॉट नो समथिंग, दैट्स ओके, इवन इट इज अ लर्निंग फॉर मी. भले ही हमने कितने भी बैचेस किए होंगे, बट एवरी टाइम द कैंडिडेट्स आर डिफरेंट, द एक्सपीरियंस इज डिफरेंट. सो इफ आई डू नॉट नो, आई विल गो बैक एंड आई विल डू माय होमवर्क. बट मेक श्योर कि आप क्वेश्चंस पूछते हो एंड यू सॉल्व द असाइनमेंट्स ऑल्सो. अभी वीकडेज की बैच में एक प्रॉब्लम, आई मीन नॉट अ प्रॉब्लम, बट व्हाट डू आई सी इज, अच्छा भी चीज है और एक मतलब दोनों बैच का होता है. वीकेंड के बैच में क्या होता है, व्हेन आई टेक डेटा एनालिटिक्स, यू टेक इट फॉर 2.5 आवर्स, 2.5 घंटा पूरे कैंडिडेट्स बैठते हैं. सैटरडे 2.5, संडे 2.5. नाउ व्हेन आई अपलोड द असाइनमेंट्स, वो पूरा हफ्ता वो असाइनमेंट्स देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग देख सकते हैं. नाउ फॉर दिस बैच एक चीज अच्छा है कि डेली यू आर कनेक्टिंग विथ मी, मंडे टू फ्राइडे. सो आपके कंसेप्ट से रिवाइज होते जाएंगे. बट एक चीज ऐसा है कि एवरी टाइम यू विल बी लर्निंग न्यू कंसेप्ट. सो यू आर गेटिंग ओनली 2 days, सैटरडे संडे. वापस से पूरा रिवाइज करो, असाइनमेंट्स करो. सो द बेस्ट पार्ट हियर इज वी आर मीटिंग एवरी डे, बट द अदर पार्ट इज एक हफ्ते में आप बहुत सारा चीजें सीखने वाले हो. सो जस्ट मेक श्योर दोज हू आर होम, दोज हू आर नॉट वर्किंग, आप फिर से रिकॉर्डिंग्स देखो, असाइनमेंट्स करो. एंड द मेन पॉइंट हियर इज कम अप विद क्वेश्चन. असाइनमेंट्स क्वेश्चन से, कंसेप्ट क्वेश्चन से, बिकॉज एंड ऑफ द डे 2-2.5 महीने बाद में एटलीस्ट चारों टूल आपको 100% आएंगे. आई कैन नॉट गारंटी, बिकॉज ट्रेनिंग इज वन थिंग और एक्चुअली वर्क करना अलग चीज है. सो वी आर हियर टू मेक योर फंडामेंटल्स क्लियर, बेसिक्स क्लियर, आपके कॉन्सेप्ट से. सो आई एम श्योर कि आप टूल पे काम कर पाओगे. बट द थिंग इज कि फंडामेंटल्स अगर आपके क्लियर हो गए ना, नोबडी कैन स्टॉप यू टू लर्न द एडवांस कंसेप्ट, एंड दैट इज हाउ वी आर प्लानिंग इट हियर. ओके, नाउ स्टार्टिंग विथ the first question, what is a SQL server? Okay, so what do you mean by SQL server? जैसे मैंने कल ग्रुप में बोला था, आपको पता भी होगा कि कौन से हम लोग एप्लीकेशंस इसमें सीखने वाले. तो वेरी फर्स्ट इज SQL server. Now what is a SQL server? So SQL server is the product which is launched by Microsoft. ओके, तो ये प्रोडक्ट किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है. एंड दिस प्रोडक्ट इज नोन एज RDBMS. ओके, RDBMS का फुल फॉर्म है रिलेशनल. ओके, आई थिंक आई लॉस्ट इट. ओके, सो RDBMS का फुल फॉर्म है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ओके, सो जो पहले के टूल्स हमारे पास मार्केट में थे, लेट्स से SQL सर्वर है, SQL सर्वर के और बहुत सारे डेटाबेसेस है. सो दोस टूल्स वर नोन एज DBMS. So DBMS का फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एंड RDBMS का फुल फॉर्म है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. सो इन दोनों में डिफरेंस है? यस, इन दोनों में डिफरेंस है. बट इफ आई टेल यू द करंट सिचुएशन, योर DBMS इज अपग्रेडेड टू RDBMS. ओके, अभी हर जगह, हर कंपनी में आप कोई भी डेटाबेस यूज करते हो, सी अभी आपके SQL सर्वर को एक और नाम है. सो इफ आई एड्रेस डेटाबेस, that means I'm talking about SQL server only. This is not any other application. इसको डेटाबेस भी बोलते हैं, SQL सर्वर भी बोलते हैं. ओके, सो इट्स अ माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट. इट इज ऑल्सो नोन एज अ RDBMS टूल.
that is your relational database management system, and it has been known as the upgraded version of DBMS. So DBMS में D का मतलब होता है database. Okay, so database management system. Now what is this system used for? इसका purpose क्या है? Why are we learning? ये data analytics के platform में क्यों डाला गया है? So the main purpose of this is it can be used for analytical applications. Okay, analytical applications बोलो या फिर you can call it as analytical transactions. I know these are little big technical words, but then yes, we'll try to understand them. So it can be used for analytical transaction, for processing. It can be used for processing your we can say processing your business data. Okay, so we'll be making it practical also, but theory भी थोड़ा बहुत करना important है. So it can be used for analytical transaction, business processing of the data. It can also be used in corporates for analysis of the data. You can analyze the data and convert that data into meaningful information, meaningful structure. तो आपके पास अलग अलग रॉ डेटास होते हैं, उस रॉ डेटा का आप समझते हो, उसको क्लीन करते हो, उस डेटा को आप स्ट्रक्चर्ड बनाते हो. आप स्ट्रक्चर आप कैसे बना सकते हो? बाय गेटिंग द डेटा इनटू योर SQL सर्वर. सो एनालिटिकल प्रोसेसिंग मींस यू गेट द डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. सो व्हाट इज द नेम ऑफ द सोर्स? वी कॉल दैट सोर्स एज अ रॉ सोर्स. ओके, आप रॉ सोर्स बोलो और यू कैन एड्रेस देम एज अ रॉ डेटा. ओके, नाउ इफ आई गिव यू वन एग्जांपल, लेट्स से इफ यू गो टू अ फार्मासिस्ट, आप किसी मेडिकल स्टोर में जाते हो. Okay, after going to a medical store, you are going and telling, sir, this is my medicines prescribed by my doctor. I want to get it from you. Do you have available? So if he have available, he will give it to you. And immediately what he will be doing it, he would be going and checking whether वो medicine है उनके पास, stock में है, stock में नहीं है. And after he is giving you the medicine, immediately वो क्या करता है? वो जाके उसको maintain करता है. Either way, he'll be maintaining into paper, pen, diary, जो older patterns था. And now what I see in the medical store, they have this laptop, उसमें वो Excel sheet में maintain करते हैं. So ultimately, what is he doing is he's trying to maintain उसने क्या sell किया है, कितने customers मेरे पास में आए हैं. So that is what is raw data. Now, I am again a medical person. You are again a medical store person. So इसमें चीजें क्या हो सकती है? I can store the data in the form of maybe Excel sheet. आपको Excel sheet नहीं पता है, आप paper pencil के form में data को store कर सकते हो. So anyway, your way of storing the data and my way of the storing the data can be different. So इस data को हम लोग ultimately क्या बोलेंगे? जब ये data developers के पास में आता है, we call them as a raw data. So raw data can be any format. The format can be और नोटपैड, किसी ने नोटपैड में चीजें स्टोर की है, किसी ने एक्सेल में स्टोर किया है, किसी ने पीडीएफ में किया है, एंड किसी में लेट्स से मे बी ईमेल बॉक्सेस. So I'll talk here about the Gmail. Okay, so this is a different pattern where you can store the data. Now when you get this data, इस data को और तीन तरह से divide किया होता है basically. So raw data के और तीन ways है. So I'll tell you those three ways. So you can categorize the raw data in the form of structured. Okay, this is the structured data. Then you have the semi-structured data. Okay, structured. Then you have semi-structured, and then you have completely unstructured. Completely unstructured. Okay, just give me a second. There's somebody at the door. I'll just open and come back. Okay. Okay, so I was talking about structured data, semi-structured and completely structured. Now, usually when we go to interviews, we always have this question like, what do you mean by raw data? और raw data के कैसे-कैसे ways होते हैं? तो ये तीन ways है, structured, semi-structured, unstructured. Okay, अब ये data किसी भी form में क्यों ना हो, notepad हो, Excel हो, आपका normal paper pencil format हो, हम इनको तीन category में
डिवाइड करते हैं. नाउ विच इज द कैटेगरी विच हैज मोर वेटेज? सो आई टेल यू हियर, स्ट्रक्चर्ड डेटा जो कंपनीज में आता है वो है 10%, सेमी स्ट्रक्चर्ड इज अगेन 10%, your 80% goes to your completely unstructured data. So when we get the data from the sources like your YouTube, your media, आपके bytes है, देन आपके ई-कॉमर्स वेबसाइट से, फॉर एग्जांपल Amazon, Flipkart, LinkedIn. सो इस तरह का डेटा जो हमारे पास में आता है, that data is known as completely unstructured. And then when the data is completely unstructured, you need more time to clean the data. जब तक आपको डेटा नहीं पता है, डोमेन नहीं पता है, डेटा का क्वालिटी कैसा है, whether it's a missing data, डुप्लीकेट डेटा है, रिडंडेंट डेटा है, जब तक आपको डेटा का नॉलेज नहीं होगा, you will not be able to create the reports and make meaningful insights from the data. So when we have a data coming from this YouTube channels, आपके मीडियाज है, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स है, that data is referred as a completely unstructured data, and this data will take more of your time to clean. Okay, अब रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में भी ऐसे ही होता है, your 50 to 60% of the time is spent to clean the data, understand the data. जैसे भी फाइनेंस का डेटा है, recently I was working, so we have this big terms, now we are familiar. Tenure है, बहुत लोगों को tenure नहीं पता होता है, which is like a duration, right? You have FD, you have mutual fund, तो ये तो basic terms हो गए. There are other many terms which we are not aware. So what we do is हम जाके Google Chrome पे सर्च करते हैं उस terms का meaning, then we go to client, we tell them, okay, this is what my understanding is for the terms. Is it same? आपका जो understanding है, is it same? Am I understanding the terms as correctly? So that's how we prepare the data dictionary also. So usually companies में ऐसा होता है, आपके पास जो project आता है, आप project में पूरा understanding करते हो, and then you prepare a data dictionary. Okay, so data dictionary would be just putting your thoughts. जैसे for example एक कोई वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, तो मैंने एक यहाँ पे वैल्यू लिया है tenure. So tenure according to me means your duration. So I would be preparing my data dictionary and passing it to the client. Now FD is nothing but your fixed deposit. So what do you mean by FD? Whether it will be a duplicate, whether it will be unique. So this is kind of information we try to understand. We make a Excel sheet. अब Excel sheet लो, आप उसमें पूरा आपका content जो भी आपको समझा है वो insert करो and pass it to the client. So the client team will be coming and checking whether your understanding is matching with them. In case कोई चीज आपको नहीं पता है, that's completely okay. You can go and ask them. But the main requirement is when you're working as a data analyst. देखो आपके इस role को ही नाम है data analyst. So if I try to break this word, data analyst means data का जिसको अंडरस्टैंडिंग है, who understands the data, who can relate that data and then convert that data into meaningful insights that is in the form of your reports and dashboards. So जब भी आपके पास डेटा इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में आता है, you check the data, analyze and then you convert that data into insights. So that is what is going to be your kind of a data which we receive. Okay, now talking more about your databases. Okay, before going there, any questions still here? No, ma'am. Yeah, the clear है. Others? No Ma'am, one questions. thing, do we have these notes on LMS? अच्छा, notes तो नहीं है हमारे पास, but what I can do is I can keep on saving this file and then maybe you can keep on getting it. ताकि No, आपको recordings No, बार-बार if we have the recordings, okay, the recordings would be perfect. Let us go recordings through the would recording. be there, but then if you want, I can keep on saving this file. Then maybe I can upload this file also if you want it handy. अगर no, if you really need notes, then maybe I'll have to search something online. Fine, let me do this. Let me search. Maybe इतना detail नहीं मिल सकता because this is what when I explain, I start writing it. ठीक है, let me see. I'll get back to you. Otherwise, अगर save करना है तो इसको भी हम लोग regularly save कर सकते हैं. ठीक है? Okay. Any questions here? Rekha, Shweta? No, ma'am, no questions. ठीक है अगर फास्ट होता है तो let me know. I'm okay to reduce the little speed here. Okay, now coming to next point here, SQL Server के साथ में और कौन से tools है market में? So SQL Server is a leading tool, okay, since many years. So history of SQL Server अगर मैं आपको बताना चाहूँ, so SQL Server was launched somewhere in the year 1989. Latest version 2019 है companies में. So since the year 1989, it was
available in the market, but it did not do very good in the market. What wonders nahi kiye. But since the year the version was, that is 2008 was released. 2008 maybe I think version ka naam tha 2008 R2. This have done a really good job in the market. People have accepted it. और ये 28 का जो version था तब से बहुत ज्यादा use में हो रहा है SQL Server. And the way I said, the latest is 2019 as per the company norms. And then now we have 2023. I'm not very sure कि वो June version है कि December. So I think the one which we have upgraded in few of my projects is November 2022. So जैसे मैंने बोला कि बहुत latest use नहीं करते हैं. So the next which we have seen is like 2022, and it is a November version which they are using. So this is the history of your SQL Server, you can say. Now along with SQL Server, there are many other databases which are leading in the market. So those are like your Oracle. Okay, Oracle we have. Then you have your MySQL. This is how we write it, MySQL. Then we have Teradata, and then we have AWS, that is Amazon Redshift. Amazon का product है ये. Then we have again the leading, the way we have Power BI as a leading reporting tool, SQL, that is your SQL Server और Snowflake. ये हमारे databases में आजकल थोड़ा well known है. Okay, so this is how we have like other brothers and sisters of databases, you can say. Now again a question here. Let's say आपने सिर्फ SQL Server किया है, and now if you go and see the JDs on LinkedIn पे आप देख रहे हो, नौकरी पे आप देख रहे हो, they're asking for Oracle, or some of the job posting are asking for Teradata. So that does it mean you need to again go catch a trainer, learn the tool? No. So whenever you're learning one database tool, almost 50 to 55% you are working with the other databases tool also. So that is one of the good part. तो आपने अगर सपोज मेरे साथ में MySQL किया है, आप SQL सर्वर पे भी वर्क कर पाओगे 50-60%, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज अगेन इट्स अ न्यू टूल, अ प्रोडक्ट लॉन्च बाय न्यू कंपनी, तो उसमें वेरिएशंस होने वाले. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस 50-60%? बिकॉज आप जो क्वेरीज लिखते हो डेटाबेसेस में, आप जो लॉजिक सप्लाई करते हो, एंड एट द सेम टाइम द फंडामेंटल्स व्हिच यू हैव, ये सारा इन टूल्स में सेम है. सेम गोज फॉर रिपोर्टिंग टूल पावर बीआई ऑल्सो. आई कैन गारंटी यू दिस, अगर आपने पावर बीआई किया है, यू कैन लर्न टैब्ल्यू अगेन वही 40-60%. बाकी का जो है आपको फिर लर्न करना पड़ेगा, किसी को फॉलो करना पड़ेगा, और मे बी ट्यूटोरियल्स यू हैव टू डू. सो दैट इज द केस, एंड वन गुड थिंग दैट यू कैन स्टिल गो एंड अप्लाई ऑन योर जॉब्स फॉर SQL एंड योर MySQL. हाँ, बट यही है कि आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चीजें जो है वो क्लब करनी पड़ेगी. सो whenever I'm making you learn any of this database tool, you are covering the remaining tool also to this particular kind of a percentage. Okay, now coming to the main point here, what do you mean by data? So I want these answers from you. Any answers? Hindi, English, Marathi? Now data is something जो हर जगह है, everywhere you have the data. So just let me know, what do you understand by the term data? क्या होता है डेटा? नाउ दिस इज द प्लेस वेयर वी आर स्टार्टिंग द एक्चुअल SQL सर्वर. अभी तक सारा एक्स्ट्रा नॉलेज था ये, एंड जस्ट द इनिशियल स्टेजेस. नाउ जस्ट लेट मी नो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डेटा? क्या होता है डेटा? Collection of raw information. Collection of raw information. Okay. ओके, एनीथिंग एल्स? बोलो क्या होता है डेटा? आपके मोबाइल में डेटा है, जीमेल में डेटा है, व्हाट आई एम राइटिंग ऑन द एक्सेल शीट इज अ डेटा. तो डेटा का मतलब क्या होता है आपके लैंग्वेज में? कलेक्शन ऑफ रॉ इंफॉर्मेशन. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. व्हाट एल्स? Okay, chalo, I'll tell you. Now I'll initiate with the first term. What is data and when it was originated? So somebody rightly said data is a collection of information. So मैं इस term को थोड़ा और आगे लेके जाऊंगी. But before that, let us understand what is a data and how it is originated. So the word data is originated from the word datum. जो जानने का आपको जरूरत नहीं है, but then just because you are making it very basic, it is good to know. Yes, Ashish, even you are correct. Collection of fact here. Okay, now data is originated from the word datum. That means, अब datum तो मैंने बता दिया theory, but what do you mean by datum? So datum or data means it is a single piece of information. Okay, so that is what is meant by your data. Now talking more about data here, data is also known as a collection of distinct का मतलब होता है यूनिक. इट मींस you're different. So data is also known as a collection of distinct small unit of information. Okay, so it can be known as this kind of small unit of distinct. Distinct matlab different. Now
what are the different forms of data? Data के क्या क्या forms हो सकते हैं? Any idea? There are varieties of form. Okay, so we have text. Text is known as the data. We have your numbers, that is again your data. Then we have, I think, media. Then we have bytes. Everything. This is what these are different forms of data which we are using regularly. Okay, now these data can be stored in a piece of paper. अगर आपने कोई paper पे भी information लिखा है, notes लिखिए, that is again a kind of a data. Okay, so anything which is stored in the form of a piece of a paper or maybe your electronic memory, which is nothing but your computers. ओके सो ये सब चीजें आप जो है इनको आप रिलेट करते हो डेटा के फॉर्मेट में. सो दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स. ये आपको कोई पूछेगा इंटरव्यू में कि डेटा के फॉर्म्स क्या है, वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ऑन द वेरी बेसिक कि डेटा के फॉर्म्स क्या होते हैं. सो वेर एवर वी आर टुडे, डेटा इज नोन एज बीइंग एवरीवेयर. डेटा इज द न्यू गोल्ड माइन, यू कैन से. ओके सो ये डिफरेंट फॉर्म्स है. नाउ कमिंग टू द टर्म डेटा बेसिस. अभी हमने डेटा देखा है. Now let us understand what do you mean by the term database. Okay, so database means it is an organization, or you can say it is organized collection of information. Okay, so database basically mean एक application है, एक warehouse है. Okay, it's like a cupboard जहाँ पे आप आपकी चीजें रखते हो, right? आपके पास अलग अलग shelves है cupboard में, drawer number 1, drawer number 2, hanging shelf, bottom shelf, drawers. So आप क्या कर रहे हो, वो एक cupboard में आप सारी चीजों को store कर रहे हो, and that is what is meant by collection of your data, but it is organized. Okay, ये चीजें, ये word बहुत important है. When you tell somebody what is a database, it is I mean basically a database is an organized collection of data. Okay, अभी organized क्यों होगा? ठीक है, आप आपके कबर्ड में, forget about database, आप आपके कबर्ड में सामान रखते हो, let it be clothing, accessories, your footwear. Now what will be important point अगर आपने organize रखा तो वो आपको कैसे help करेगा? If you're keeping it messy, I know what is going to happen, but what happens if I keep my cupboard very organized? How it will help you? अरे ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कैसे हेल्प होगा? Distinguish and pick things easily. ओके सो यू आर करेक्ट. सी यू आर ट्राइंग एंड यू आर करेक्ट. आपने बोला पिकअप, तो पिक करने के लिए इजी होगा, तो मैं उसको टेक्निकल टर्म में कन्वर्ट करती हूँ. सो इट इज इजी टू एक्सेस. ओके, इट इज इजी टू एक्सेस, देन इजी टू एक्सेस एंड इजी टू मैनेज. आप इजीली मैनेज कर पाओगे. इजीली मैनेज मीन्स आपके पास ऑलरेडी स्पेस होगा कहीं ना कहीं, उस स्पेस में आप वापस से आपकी नई चीज रख सकते हो, इंट्रोड्यूस करा सकते हो. एग्जैक्टली डेटाबेस मीन्स द सेम थिंग. सो डेटाबेस मीन इट्स अ ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. और आप ऑर्गेनाइज क्यों रख रहे हो, मेसी क्यों नहीं रख रहे हो डेटाबेस में डेटा? बिकॉज you can access that data easily whenever required and you can manage them properly. Okay, so I think you can remember this information of the cupboard. Now let us understand more about this term, that is organized. I know everybody knows basic information, basic English पता है कि organize क्या होता है, but I would like to highlight more on this word in terms of databases. So you can organize data. तो ऑर्गेनाइज करते बट कैसे करते हैं, जिसमें आपको एक एग्जांपल दिया था कबर्ड का. आप कबर्ड में शेल्फ्स डालते हो, ड्रॉवर्स डालते हो, कुछ ओपन स्पेसेस रखते हो. सिमिलरली व्हेन वी से हाउ डू यू ऑर्गेनाइज द डेटा इन द डेटाबेसेस, तो इसका मतलब होता है वी कैन ऑर्गेनाइज द डेटा इन योर डेटाबेसेस इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स. ओके, अब टेबल्स को और कैसे अरेंज करते हैं? टेबल्स को अरेंज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ rows and columns. Okay, so for example if I tell you this section, ये देखो ये मेरा एक टेबल है, correct? It's a blank table, there's no information here, but how is this table created? ये टेबल कैसे क्रिएट हुआ है? There are 2 columns and there are multiple rows. Correct है यहाँ तक? Are you understanding? Yes, ma'am. Right, so this is my table, this is my cupboard. So focusing more on the table because we have data being stored in your database in the form of tables. So this table has how many columns? Column number D, column number E, and then you have multiple rows here. Similarly, what happens in the database is when we say data is organized, so data is organized in the form of tables. And what does the table can hold? So the table can hold your rows and columns. Also it can hold indexes. Okay, so indexes I'll come back in 2 minutes. ठीक है,
So ये सब होता है table, rows, columns, and then it can also store the data in the form of indexes. Now indexes again, let's make it simple. So let's say it's a Sunday evening, you're reading a novel. आपने एक novel start किया read करने के लिए, you want to complete and you want to move to another novel. So what you basically do is you want to read some of the chapters जो आपने miss किया होगा. So if you remember the page number, that's okay. If you do not remember the page number, आपने जो भी 15 chapters थे आपने cover up किए. Now there are few chapters, a few pages you have missed out. So what you do, you go to the index page, जिसको हम लोग content page भी बोलते हैं. You go to that page, you quickly go and search कि okay, what is the chapter number for this particular lesson? What is the chapter number for this particular information? So indexes in your databases also mean the same. So indexes means what? It is used to make the search faster. Okay, it is used to make, okay, let me write it properly, to make the search, or maybe you can say to find, okay, search bolo, या फिर you can say to find the relevant information faster. Okay, that's what it happens, right? अगर आप suppose कोई book पढ़ रहे हो, novel पढ़ रहे हो, and quickly you want to land on to that particular item or page, what you do, you go to index, you go to page number. So similarly, when we will be doing the concept of index in your databases, we are going to understand कि आपको index कैसे help करेगा चीजों को जल्दी से search करने के लिए. Okay, so I hope we are clear to all of these basic points. Now let us understand the next term, that is what is the main purpose of DB. So DB is nothing but I'm using the short form for your databases. Okay, so the main purpose of database is to operate. Okay, अब इतना डेटाबेस हम लोग सीख रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, हाउ यू विल बी यूजिंग इट. सो हमें पता है ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को टेबल्स एंड रोज के फॉर्मेट में, जिसमें हम इंडेक्सेस अप्लाई कर सकते हैं जस्ट टू मेक द सर्च फास्टर. आपको डेटा के अलग अलग फॉर्म्स भी पता है, यू नो द मीनिंग ऑफ डेटाबेस ऑल्सो. नाउ व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ योर डेटाबेस, क्यों कंपनीज में यूज करते हैं डेटाबेस, एंड व्हाई वी ऑलवेज स्टार्ट द डेटा एनालिटिक्स सेशंस विद योर डेटाबेस. व्हाई डिडंट आई पिक अप अ पावर बीआई टूल, व्हाई डिडंट आई पिक अप एक्सेल, बिकॉज दिस इज द हार्ट ऑफ योर डेटा एनालिटिक्स application or data analytics platform, you can say. So the main purpose of a database is to operate a large amount of information. Okay, I think मैंने अभी initially ही बताया था कि Excel में इतना capacity नहीं है. No doubt Excel can also do wonders. Many things Excel can do जो हमें पता भी नहीं है. We are still following the regular work of Excel, but Excel can do many things. Okay, now, but talking more about databases, it can store a large amount of information. At the same time, this information is used by storing. Okay, I'll put this in caps lock. So information is used, जो information आपने database में रखा है, उसको आप क्या करते हो, स्टोर करते हो. जो आपने स्टोर किया है, जो आपने कबर्ड में रखा है, you always have the opportunity to go and retrieve, fetch करो, बाहर निकालो. And why do we store, why do we retrieve? Because we can manage the data, ताकि आपका managing better हो data को, and you do not spend your time. And that is the main purpose you are using a database. So database can store, very important word, large amount of information. बहुत ज्यादा information उसमें store हो सकता है, 5 years, 10 years, 15 years, पूरा history. Now why are you storing this information? So that you can retrieve them. जब भी आपको मन करता है आप चीजों को बाहर निकालो, query करो, you can see the database. Okay, and you are organizing it in a better way, in a structured way, so that it does not take much of the time to get the data back from the databases. Okay, now if you are good till here, I'll give you some real time examples. So I'll give you one example कि कहाँ database use हो सकता है. अभी ये तो मैंने बताया था कि pharmacist database को store करता है paper के form में, notepad के form में, but real time में where do you see this data? So the website which we use regularly, that is the World Wide Web, www. ठीक है, so यहाँ पे आपकी जो websites है, they are also generating the data, they are going at the backend servers and giving you the data. So these are nothing but your dynamic websites. Okay, यहाँ पे आप data regularly use करते हो. So your dynamic websites are again using a large amount of data. तो ये data क्या हो रहा है? So I can say there are many dynamic websites on the World Wide Web nowadays which are handled through databases. तो यहाँ पे आपका handling क्या हो रहा है? At the backend we might not be aware. ये हमें पता भी है कि डेटा कहीं तो स्टोर है, you are getting the information. So basically dynamic websites are one good example which are again handled by database at the backend. Okay, one more example here. So maybe if I talk about let's say room booking, hotel room booking.
Okay, so hotel room bookings, if you see, and if you go to the website of, let's say, maybe this XYZ hotel, and now you want to book it. So what happens is maybe two adults, two children, one senior person. The moment you put it, you get all the information. Do you have a deluxe room available? Do you have a premium room available? So you get this information. Now, why are you getting this hotel information? That is the availability of the room. This is again because of the dynamic website. तो उसमें क्या हो रहा है, किसी ने इंफॉर्मेशन फीड करके रखा है, and just by doing few selections there, this dynamic website is using the database. So this dynamic website, it uses a DB. It again uses the databases and give you the information. Okay, sir, only 5 rooms are available as per your search requirement. So the other two examples which I can think of, that is the database, which is you're regularly using websites, and second is like a hotel booking. Okay, so this is what we have about databases. Now, little bit of theory and then I'll take you to the database tool. Then we don't need to come back to the theory part again and again. We would be coming, but then I think a very basic level of theory we would be able to complete. Now, list of databases, I think हमने already यहाँ पे देख लिया है. Whatever we have. So there are many more databases. So I'll just put it here, etc. That is many more, but these are few ones. If you do market research, ये भी काफी ट्रेंड में है, काफी जगह यूज हो रहे हैं in small companies, big companies. It depends. आप किस लेवल पे अप्लाई कर रहे हो, सो किस कंपनी में स्मॉल स्केल है, मीडियम है, लार्ज है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट दे विल यूज द डेटाबेस, बिकॉज एवरी डेटाबेस विल बी अ लाइसेंस. पेड होता है, हम लोग जो यूज करेंगे वो अनपेड है, इट्स अ फ्री वर्जन, राइट? एंड कंपनीज विल ऑलवेज बी यूजिंग द एंटरप्राइज वर्जन. Okay, so you call it enterprise version or you call it let's say as a license version. It means the same, license version, enterprise version. Now why do we use a license version? Any idea? क्यों हम लोग फ्री वर्जन नहीं यूज करेंगे कंपनीज में? What do you think? Okay, देखो, we will use license versions because security. We are not allowed to leak the data of the client. तो आपको क्या करना होता है? You want to have the data secure. You do not want the client's data की leak हो, कोई भी आके check करे, उसमें proper security हो. That is the reason you are using the license version. At the same time, in license version, multiple users, that is your multiple employees can use that. Okay, multiple employees can work on their databases, and that is how we go with the license version. Okay, and it will go for a longer period of time. जब तक उसका सब्सक्रिप्शन है, 1 year का सब्सक्रिप्शन लेके रखा है आपके कंपनी ने, आपके टीम ने, it will go till that time. 2 years है, 3 years है. So depending on the team size, depending on the project size, this will keep on updating. आपको पता नहीं चलेगा कि लाइसेंस 2 साल का है, 3 साल का है. It happens all by the database admin. But the main purpose, why do we use a license version, also known as the enterprise version? Because security better है हमारे पास में, multiple people can work together, and data capacity तो है उसमें. You get a better data handling capacity. अभी हमारे पास जो trial है, we may not be able to store like historical data 3 साल 4 साल, because capacity limited है. This database tools are there for you to understand, to work before you go to enterprise version. So यहाँ पे capacity आपका कम होगा, definitely here the capacity would be better. Okay, so now just tell me, I'll just take my cursor up, any point which needs to be repeated, and then we'll go to more detail about your databases in terms of query writings. Okay, I'll just go step by step so that you can see, and let me know if anything needs to be re-highlighted. Okay, are we fine? Any questions, anybody? Akash, I think you joined. I could not speak to you. Any questions you have, Akash, Ashish? Pallavi is also there. Yes, Pallavi. I could not. No, ma'am. Okay, fine. ठीक है, और भी किसी को है, do not hesitate. If anybody is saying no, आपको है, you please feel free to do it, because I know we are not doing offline session. Online में थोड़ा दिक्कत होता है,
but then I'll make sure like we understand it. Okay, now again talking more about your SQL server. So जैसे मैंने आपको अभी inform किया था, current market जो है it is working on RDBMS, that is your relational database management system. I'm just writing the word your relational. बाकी का DBMS तो आपको पता ही है, common ही है. So the modern database are managed by DBMS. So modern database means your SQL Server, Snowflake, Redshift, Oracle. ये सारे database के नाम लिए मैंने. अभी जो modern databases है, they are managed by your RDBMS. Okay, तो older नाम क्या था? मैंने just बताया था आपको DBMS. This is the older, right? RDBMS is the latest. So wherever you go and apply, if you already working in IT, you check with your colleagues जो database पे काम करते, they'll tell you RDBMS. Older was DBMS. Okay. Now we have a language known as SQL. That is उसका full form है. उसको हम लोग SQL भी बोलते हैं. जैसे SQL, जैसे पहले ऐसे नाम था SQL का, SQL. Okay, so हम उसको SQL भी बोलते हैं. We call it as a SQL also. At the same time, we also have the full form for SQL. The full form is Structured Query Language. The full form here is Structured Query Language. ठीक है, देखो मैं आपको 2-3 चीजें बता रही हूँ. यहाँ पे हम लोग क्या सीख रहे हैं? वी आर लर्निंग एसक्यूएल सर्वर. एसक्यूएल सर्वर एक डेटाबेस है, बट उसमें एक लैंग्वेज चलती. आपको जब क्वेरीज लिखना होता है, सी आई गो टू माई डेटाबेसेस हियर. सो दिस इज माई डेटाबेस. ओके, ये डेटाबेस है आपका. अगर आप नाम देखते हो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो. ओके, इस डेटाबेस में एक लैंग्वेज चलता है, वो लैंग्वेज का नाम है एसक्यूएल. ओके, ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी मेरे पास टूल का ही नाम है सीक्वल सर्वर. फॉर एग्जाम्पल आपने ओरेकल लिया, आपने स्नोफ्लेक लिया, तो उसमें भी एसक्यूएल ही आपका लैंग्वेज चलता है. दैट इज हाउ 50-60% of the data और fundamentals are same. Okay, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे SQL सर्वर का लैंग्वेज चल रहा है because it is SQL सर्वर application और Oracle में Oracle चलेगा. No, whichever database you pick up, you have the language which works is your SQL, जिसको हम SQL भी बोलते हैं. But the full form of this language is Structured Query Language. अब structured क्यों? Because data is arranged in a very symmetrical manner, ताकि आप डेटा को एक्सेस कर पाओ, आप डेटा को यूज कर सको as per your need and requirement. So structured query language is used to operate the data stored in database. अब इसका यूज क्या है? मैंने तो ये बता दिया कि एक लैंग्वेज है जो डेटाबेस में चलती है, बट इस लैंग्वेज का पर्पस ये है, इट विल हेल्प यू टू ऑपरेट द डेटा. ओके, सो द मेन यूज ऑफ दिस एसक्यूएल इज टू ऑपरेट, ओके, टू ऑपरेट द डेटा which is stored in your in database. तो ये language क्या करेगा? It will be acting as a communicator. So if I tell you in more detail here, so this is my SQL. Okay, that is fine. Okay. Let me redo here. ठीक है. So we have your SQL, that is your SQL application, SQL Server Management Studio. Then in center you have your SQL language. Okay. And then gradually you have your developer. यहाँ पे developer हो सकता है people like you and me, और या फिर user or let's say client, right? Now what happens here is if the client or the developer want to understand how many people have purchased a product. So for example, if I take a table here, मेरे पास एक table है customer, I have a table known as product, and then I have थर्ड टेबल नोन एज सेल्स. अब ये तीनों टेबल्स क्या है? आपके डेटाबेस में सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में सेव करके रखा है. ठीक है. नाउ एक कस्टमर टेबल में 10 कस्टमर्स का नाम है, वहां पे 10 प्रोडक्ट्स है जो वो कस्टमर्स ने परचेस किए हैं, और वो जो परचेस किए हैं प्रोडक्ट्स, उन प्रोडक्ट्स का कुछ प्राइसिंग होगा, 20 रुपीज, 100 रुपीज, 1000 रुपीज. करेक्ट. नाउ आई वांट टू सी इंफॉर्मेशन लाइक हाउ मेनी कस्टमर्स हैव प्लेस्ड द ऑर्डर, ओके, और कौन से प्रोडक्ट्स purchase किए हैं. So which table I should be using? You got the scenario. I have 3 tables. I want to see how many customers have placed the order as of today. आज के दिन में कितने लोगों ने ऑर्डर को प्लेस किया है, और कौन से प्रोडक्ट्स कौन से कस्टमर ने परचेस किया है. So which tables I should be using? कौन सा यूज करना चाहिए? कस्टमर प्रोडक्ट
राइट. सो मेरे पास सेल्स मुझे नहीं देखना है कि हाउ मच आई हैव अर्न. तो 10 लोगों ने 10 चीजें परचेस किया है. आई वांट टू सी कि उन्होंने कौन से प्रोडक्ट्स परचेस किया है. सो दैट इज हाउ आई विल बी मूविंग टू माय कस्टमर टेबल. आई वुड बी मूविंग टू माय प्रोडक्ट टेबल. ओके. सो बेसिकली हम जब दो टेबल्स के बीच में रिलेशन बनाते हैं, दैट इज नोन एज योर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. बिकॉज क्या होता है डेटाबेसेस में जो मैनेज किया जाता है आरडीबीएमएस के थ्रू, वहां पे मल्टीपल टेबल्स के बीच में रिलेशन होता है. रिलेशन मींस सी यू एंड मी, अगेन वी हैव अ रिलेशन. हाउ? वी आर कनेक्टेड बाय अ मीडिएटर इन बिटवीन, दैट इज रेडिकल. You know Radical, I am a lead trainer in Radical. You want to learn data analytics, and I have a little bit knowledge of data analytics. So basically, I am the sender, you are the receiver. So we are connected, we have a relationship by Radical Technologies. So यहाँ पे भी वही चीज हो गया है. जब हम दो टेबल्स को कनेक्ट करते हैं डेटाबेसेस में, दैट प्रोसेस इज नोन एज RDBMS, मेकिंग अ कनेक्शन बिटवीन योर डेटाबेसेस. और ये कनेक्शन हम इसीलिए बनाते हैं बिकॉज आपको डेटा कस्टमर का भी चेक करना है, आपका प्रोडक्ट का भी चेक करना है. सो बेसिकली इफ द डेवलपर वांट टू गेट द डेटा फ्रॉम प्रोडक्ट कस्टमर, वो क्या करेगा, वो SQL लैंग्वेज के पास जाएगा. वहां पे बेसिक क्वेरीज, आई विल नॉट से कोड्स, दे आर नोन एज क्वेरीज, वो क्वेरीज लिखेगा और वो क्वेरीज कहा जाएगी आपके माइक्रोसॉफ्ट SQL एप्लीकेशन के पास. वो टेबल्स में से जो भी कस्टमर्स हैं, जो भी प्रोडक्ट्स है, वो रिटर्न हो गए क्वेरी में, एंड द यूजर विल बी एबल टू सी द रिजल्ट. तो इट विल बी टू एंड फ्रो. ये दिस विल बी योर पोजीशन नंबर 3. ओके. सो आपके 3 से 2 में जाएगा. जैसे इसको मैं नंबर 1 देती हूँ, देन आई गिव दिस SQL एज नंबर 2 एंड आई गिव द डेवलपर एज नंबर 3. सो 3 पर्सन वांट्स टू सी समथिंग, तो उसने कोड लिखा, क्वेरी लिखा, एंड वो क्वेरी फायर हुआ डेटाबेस में. जैसे ही डेटाबेस में कस्टमर प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन मिलता है, इट विल अगेन गो बैक टू योर SQL जहां पे रिजल्ट मिलेगा आपका, and then the developer will be able to see the output. So that is how this channel would be to and fro. पहले back to forward, then forward to back, and that is how we have the databases working. आप किसी भी database को pick up कर लो, Oracle, Redshift, सारों में process यही होता है. और सब रिपोर्ट database tool में language आपका कौन सा चलता है, that is your SQL language, and that is what we are going to learn into your SQL Server Management Studio. हम लोग queries लिखने वाले हैं SQL language की, and it is common with all the databases. Okay. Now I think और थोड़ा एक 5 minutes का theory बचा है, and then we are okay to go with the application. ठीक है. So yes, now the theory is related to your difference between your DBMS, a very patent and a regular interview question. Let it be you are joining as a fresher, आप lateral भी हो. Suppose even if I go and try to switch my organization, even I will be asked the difference between RDBMS and DBMS. Okay, fine. So let me just make it a little bold so that I can highlight the information here. Okay, so by now everybody knows the full form, so I'm not writing a full form here. DBMS means database management system, RDBMS means relational database management system. अब इन दोनों में डिफरेंस क्यों पूछे जाते हैं? Because the reason here is कि it has upgraded, अपडेट हुआ है. DBMS अपडेट हुआ है RDBMS में. ओके, तो DBMS में क्या हुआ करता था? So in DBMS your data is stored in the form of you can say stored in the form of files. ओके, यहाँ पे डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स, बट आपके पास RDBMS में डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ टैबुलर फॉर्म्स. ओके, टैबुलर फॉर्म मींस टेबल. सो आई एम मेकिंग इट अ मोर टेक्निकल वर्ड हियर, बट आपको पता है कि DBMS में कैसे डेटा स्टोर होता है, फाइल्स के फॉर्मेट में. यहाँ पे फाइल्स पे फोकस किया जाता है. ओके, बट व्हेन यू स्टोर द डेटा, जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे कल से, दैट टाइम यू कैन सी वी आर स्टोरिंग द डेटा इन RDBMS विद द हेल्प ऑफ टैबुलर. तो टैबुलर इज नथिंग बट टेबल. ओके, अब टेबल्स के अंदर क्या क्या होगा हमने देखा था अभी. सो टेबल्स विल बी नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ योर रोज प्लस कॉलम्स. ठीक है, तो ये थोड़ा और बेटर ऑर्गेनाइज है. नाउ to work with the RDBMS system, you need individual access. That means हर किसी को एक एक access मिलता है, and at a time only one person will able to work. एक ही user work करता है. But with RDBMS, multiple data elements can be used. So here I am writing it multiple. Okay, that means आपको कुछ object को use करना है, जिसको मैं नाम दे रही हूँ data elements. Okay, so if you want to work with the data element of your DBMS, so individually access देना पड़ता है, but in RDBMS multiple data elements can be accessed at the same time. So I can write it here, multiple data elements can be accessed at the same
time. Okay, so in all these differences, you will see RDBMS is leading the platform. Okay, now since we are into DBMS, there is no relationship between the table. Jैसे customer है, product है, sales. We have three tables, right? Customer, product, and sales. There will not be relationship. So there is no relationship between the data. Now, DBMS, as the name says, RDBMS, there will be a relations between the data. So I'm writing it here, relations between the data. Okay, और वो relation कैसा है? इस तरह का, tables, और tables में आपके rows and columns. Okay, now here one more point which is very important, that it only deals with a small amount of data. Here the data is small amount of data, and gradually with RDBMS it can work with, it deals with, you can say deals with large amount of data. बहुत huge data वो handle कर सकता है, large amount of the data here. Correct? Now one more point here, it supports single user. At a time एक ही user support करेगा वो single user, and RDBMS will support multiple users. Okay, multiple. If you want to take a screenshot, you can take a screenshot, because I know when we go for interviews we learn like 4 or 5 differences. Time पे 2-3 ही याद आते हैं. So I'm trying to make बहुत बेसिक जो याद रह सकते हैं. वैसे डिफरेंसेस आप ऑनलाइन देखो तो बहुत मिलेंगे, but the regular ones which gives the information to the interviewer. Okay, इन्हें पता है कि दोनों का डिफरेंस क्या है, किसका पर्पस क्या है. So DBMS will support single user, and RDBMS will support your multiple users. ठीक है, so I think we have covered a good amount. And one more point before I close up this topic, that it will be slower. This is little slower in getting the data. आप जब query लिखोगे तो query निकालने में आपको time लगेगा. So it's like it will take us less time. Okay, so less time means basically जैसे आप बोल सकते हो कि data बहुत बड़ा है, अगर huge data है, it will be slower. Sometimes it's faster also, but अगर आप work कर रहे हो बड़े data पे, it will take some little extra time to fetch the data. That's why you can say that data fetching, I'll write it more technically here. So data fetching is slower for bigger data sets. So वैसे वो small data set ही store करता है, but sometimes if we have an enterprise version, we are allowed to store the huge data. But then getting the result from the data will be little slower, and here it is just the opposite. Fetching the data is faster, because अब इसमें data faster क्यों है? I will not just keep it like इसमें slow है तो इसमें faster है. इसमें faster इसलिए है because we have relational approach here. Relational approach means हर एक टेबल दूसरे टेबल से कनेक्टेड है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक रियल टाइम, इफ आई वांट टू अप्लाई अ जॉब इनटू योर कंपनी, आई नो यू, you know me, and you know your manager. So we all three are connected, right? You can take my profile, send it to your, I can take and send it to you. You are my good friend. You can send it to your colleague or directly to HR. अब वो मेरा प्रोसेस फास्टर क्यों हो रहा है? Because I know you, और आप मेरा हेल्प कर रहे हो, क्योंकि we all are interconnected. Now somebody who wants to join your company, जिसका आपसे रिलेशन नहीं है, उनको कोई कलीग्स नहीं पता है आपके टीम में, आपके कंपनी में, वो क्या करेगा? He'll go to careers portal, he'll upload the resume, and then if he's lucky, he'll get the call back, right? That's how it happens. But अगर relational है, relationship है, the result would be faster. Maybe even the person who have applied the resume by the careers page of the company, even he will get a call. You never know. एक महीने में, 2 दिन में, you never know. But then for me, the process can be little faster. So that's how the RDBMS will be working faster. Okay. And now if I want to give you finally the examples. So यहाँ पे आपके example होगा XML. That is your markup language. Then we have your data registry. Okay. So we don't need to go into this details. Few examples I'm giving you. And the entire world, IT world works on RDBMS. So RDBMS के examples तो मैंने आपको बताई है. MySQL है. Then you have SQL Server, which we are already using. Then you have Oracle and so on. ठीक है. So that is how we have seen the differences between DBMS, RDBMS. Just go through it once. I'll just increase the size and just walk yourself to these differences. Okay, main focus तो अपना इसी पे है, but then it is always good to know from interview perspective, like how it is originated, क्या better ये चीजों को कर सकता है.
Okay. Are we good till here? Yes. Okay, thank you. Now I'll take you to the SQL Server. So this is the version which I have 2019. Now, when you install it, what happens is this gets, I mean, when you download, install, ये आपका setup ऐसे दिखना शुरू हो जाएगा. Now, when you first time try to log into the SQL Server, this pane, it will be introduced to you. ये जो pane है, it is nothing but your data credentials. So when we do it tomorrow practically, I'll tell you, अगर आप लोग नहीं देख पा रहे हो, I'll tell you how to get to this pane. But usually you get to see this pane. Server type will be the database engine. इसमें बहुत सारे types है, but then we will be working with a database engine. Okay, server name. Just because we do not have a paid version, we do not have a licensed version, तो ये हमारा server name क्या होगा? Laptop name. It will by default pick up the laptop name, which is taken for me also. Authentication, you have two authentications. Okay, now we have more here. ये upgrade होते रहता है. So Windows authentication, you have Active Directory. So again, when we go to enterprise versions, paid versions, आपको credentials मिलेंगे. जैसे Ruchika Rathi is working to a company. That company will create a login ID password for me. But since we are using a trial version, my Windows authentication, that means जब मैं अपना लैपटॉप ओपन करती हूँ, मेरा जो पासवर्ड है, सेम पासवर्ड आई हैव कॉन्फ़िगर्ड हियर. आपके लिए भी बाय डिफॉल्ट हो जाएगा इफ यू मेक इट विंडोज ऑथेंटिकेशन. ओके, बट व्हेन यू वर्क ऑन अ कंपनी स्पेसिफिक, इट विल आस्क यू फॉर क्रेडेंशियल्स. ये देखो, जैसे मैंने चेंज किया SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन और मे बी SQL सर्वर, ये जो भी अलग अलग ऑप्शन है, it will ask you for the company specification, user ID and the password. But just to make it easier, what are we doing? We are just making it Windows authentication here. Okay, so मेरे जो laptop का credentials है, it has taken by default, and now I need to connect it. So whenever you work with databases, every day after every 2 hours आपको हमेशा database को connect करना पड़ता है. Okay, so I'm connecting it. You need a net connectivity. Okay, connecting means what? We are connecting to databases, and that is how the connect option will work. Okay, so now if you see, I can see the list of different database folders. ये आपके अलग अलग folders है, folder 1, folder 2 and so on. Now as a part of your data analytics journey, we will be working with only 2 folders, database and security. बाकी के जो भी folders है, server object से लेके ये integration, we will not be doing because this is not required. Again, people who are working as admin or as a hardcore SQL developer, उन लोगों के लिए options work करते हैं, but this is not required. So we have databases and security. These two options we are going to work. Okay, now this is known as the object explorer और ऊपर का अपना menu bar है. So whenever we feel like, इसको हम लोग theoretically अभी नहीं करते कि किस option का meaning क्या है, when we write the queries, this some of the options, not all, some of the options will be covered. So left hand side is nothing but the arrangement, and this place which you see blank, अभी वो currently blank है, I would be क्लिकिंग ऑन न्यू क्वेरी. तो आपका ये जो आइकन बार है, दिस वी कॉल एज आइकन बार, क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ जो भी है वो आइकन के फॉर्म में डिनोट किया है. नाउ व्हेन यू क्लिक ऑन न्यू क्वेरी हियर, इट आल्सो हैज अ शॉर्टकट कंट्रोल एन. सो व्हेन यू क्लिक ऑन न्यू क्वेरी, then a query section will be highlighted here. Basically एक canvas open होगा. Now this canvas you can use to write your queries, जिसके थ्रू आप database पे questions डाल सकते हो, and then you get the result and set. Okay, now talking more about the database folder here. So if I expand it, देखो जैसे ही मैंने expand किया है, I have some system databases. Okay, so when you expand, ये सबके पास में रहेगा, ये folders आपके पास में रहेंगे. If you go to 2021, 2022 में थोड़ा maybe एक दो folders ज़्यादा हो सकते हैं, but anyways, we are focusing only on the first two. So when you expand this databases, you have multiple folders. Forget about this. ये 3 databases मैंने बनाए थे. ओके, इसलिए आप पे वो दिख रहे हैं, बट यू विल बी एबल टू सी ओनली 2. आपके डेटाबेस में ये 2 ही चीजें होगी, सिस्टम डेटाबेस एंड डेटाबेस स्नैपशॉट. So system database, if I expand it here, as the name says system, so these are auto generated by the system. आप जब इंस्टॉल करते हो किसी भी वर्जन को SQL सर्वर के, तो क्या होगा, आपके ये डेटाबेस ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे. एंड इफ यू सी दिस काइंड ऑफ अ डेटाबेस, जो डेटाबेस स्नैपशॉट के नीचे है, दीज आर द डेटाबेसेस व्हिच इज क्रिएटेड बाय मी, मैंने खुद से बनाया है. ओके, तो हमारे पास क्या होता है, डेटाबेस होता है. डेटाबेस के अंदर आपके अलग अलग स्कीमास होते हैं. सो नाउ आई विल टेल यू द एक्चुअल टेक्निकल नेम्स हियर. लेट मी क्लोज इट वंस अगेन. वी हैव अ डेटाबेस. डेटाबेस में हमारे होते हैं स्कीमास, और स्कीमास में होते हैं रोज एंड कॉलम. सो लेट मी ओपन, लेट्स से कोचेक्स लर्निंग. ठीक है, जैसे कोचेक्स लर्निंग मेरा एक डेटाबेस है. सी आई राइट इट हियर सो दैट यू कैन मेक सेंस ऑफ इट. सो फर्स्ट मैंने ओपन किया यहाँ पे
Cochex learning. Okay, this is referred to my database. Okay, after Cochex learning, database diagram. So ये diagram में हमें कुछ नहीं करना है, वो सिर्फ आपको expand करके data को दिखाता है. This will never work because we are into the trial versions. We directly need to jump into tables. Okay, so database का नाम है Cochex learning. In that database, what we have created tables, right? Because we are into RDBMS. How we are working? We are working into RDBMS. तो आपका data हमेशा होगा tabular format में. अभी टेबल का और फॉर्मेट क्या है? इफ यू कम डाउन, सो इफ आई एक्सपांड दिस टेबल, हमारे पास टेबल में क्या होगा? रोज एंड कॉलम्स. ओके, सो ये टेबल्स में लेट्स से इफ आई गो टू अ यूजर टेबल हियर, मैंने इसको फिर से एक्सपांड किया, ये टेबल में मेरे पास में कॉलम्स एंड रोज. ओके, ये कॉलम का नाम है एम्प्लॉय, मोबाइल नंबर, सिटी एंड सो मेन पर्पस हियर आपको इतना ही याद रखना है. वी हैव अ डेटाबेस, आई एम जस्ट कलर कोडिंग इट. आपके पास डेटाबेस है, डेटाबेस में आपने बनाए टेबल्स, इन सबको बनाने के लिए हमारे पास में क्वेरीज है, सिंपल क्वेरी, नॉट वेरी डिफिकल्ट वन. और इन टेबल्स में हाउ आर टेबल्स क्रिएटेड? विद द हेल्प ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ योर रोज एंड कॉलम्स. सो दिस वी आर गोइंग टू सी विद द हेल्प ऑफ योर फॉर्मूलाज. डेटाबेस में टेबल इज जस्ट लाइक योर कबर्ड, और कबर्ड में आपके अलग अलग शेल्फ है, ड्रॉवर्स, मे बी शेल्फ. तो दिस इज नथिंग बट योर रोज एंड कॉलम्स. और रोज कॉलम्स में आप क्या इंसर्ट करोगे? यू विल बी इंसर्टिंग योर इंफॉर्मेशन. It will be your data information which you can store, you can fetch and you can manage. जैसे आपने कबर्ड में कुछ चीजें रखी है, आप कभी भी निकाल सकते हो, कभी भी एक्सचेंज कर सकते हो, कभी भी रिप्लेस कर सकते हो. एंड दैट इज हाउ द डेटाबेस इज गोइंग टू हेल्प यू. ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर रहेगा. एंड देन टू राइट द क्वेरीज वी हैव लिटिल बिट मोर ऑफ कमांड्स. तो हम लोग जब कल क्वेरी स्टार्ट करेंगे, सो वी विल बी स्टार्टिंग बाय अंडरस्टैंडिंग द कमांड. सो अभी हमने ये देखा, this steps we have seen. Database में table में rows and column, correct? But to write this query we have to get introduced ourselves to the syntaxes. So this is the place where we are going to actually start understanding the practical sessions. So SQL के अलग अलग languages होते हैं. Okay, it has some 4 to 5 languages. These languages operate on different commands. So today I'll not take that command just to bombard everything on the first day. मैं सिर्फ आपको commands के नाम बता के we will just go to the question and answers. So DDL is one command. The full form is data definition language. Then we have DML, that is data manipulation language. Then we have DCL, data control language. And then gradually we have TCL, that is transactional control language. So I am not expecting कि आपको ये full forms अभी के भी याद रहेंगे. It will take 3 to 4 days. इसमें बहुत सारे अंदर commands हैं. Okay, commands के through हम table बनाएंगे, columns बनाएंगे. So it will take time, but I'm sure at the end of the week you will be able to have all information कि data बनता कैसे है, tables में row और column कैसे डालते हैं, और वो डालने के लिए आपको ये अलग अलग लैंग्वेजेस देखना पड़ेगा. और ये लैंग्वेजेस और सब डिवाइडेड है. जैसे डीडीएल में एक चलता है कमांड क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप. सो वी विल बी वर्किंग विद द सब डिवीजन ऑफ दिस लैंग्वेजेस. ठीक है, सो आई थिंक अभी कुछ क्वेश्चंस है, यू लेट मी नो, कुछ रिपीट करना है. एंड देन बिकॉज ये टॉपिक और वास्ट है, इसमें और डिटेलिंग बताना पड़ेगा, सो विल स्टार्ट फ्रेश फ्रॉम योर. एंड यस, जस्ट लेट मी नो. So I think 2-3 have joined late, na? Nothing, no questions. अच्छा, ये एक्सेल फाइल सेव करना है. यू वांट मी टू अपलोड इट टू योर रिकॉर्डिंग्स, या फिर आप रिकॉर्डिंग्स में देख लोगे व्हाट एग्जैक्टली क्या करना है? Because as such notes तो we don't provide it because it's like by the end of the month, और जैसे आपके concepts clear होंगे you will be very much sure. So you can search online, but in case notes चाहिए है, so the written notes I can save it. Recording में तो है ही आपके पास, but I can keep saving it maybe. Save it क्या? अच्छा रेखा, yes, आपके लिए ज्यादा useful रहेगा ना. ठीक है, I'll save it. I'll make a folder actually because radical के 2-3 batches we have for different applications. So I think let's save it somewhere here. Radical का folder is already there.
So we just make it as day 1 SQL. Okay, so tomorrow I'll pick up the same file so that I can add the day 2 and हम लोग इसी फाइल से रिवाइज भी कर पाएंगे वापस से. ओके हाँ, अब पॉइंट रहता है इंस्टॉलेशन का. सो मेरे पास फाइल्स तो आ चुकी है, but the file size is very huge. So let me see, give me some time, maybe half an hour, 1 hour more. I'll let you know group में कि you should install 2022 या 2019 से ही we can continue. And it's anyway, so if you are installing 2022, I'll keep 2019 only, ताकि ना आप दोनों versions को देख सको. आपके पास जो रहेगा, I can also see it. उसमें कुछ extra नया features है which I feel like कि लेना चाहिए, we'll do it, right? और I'll keep 2019 या फिर मैं 2022 भी इंस्टॉल कर लूंगी. You can have 2 versions together, it will work. So let me decide if I'm able to upload. आपको सेटअप पे डाउनलोड कर लो, आपके पास में ऑलरेडी डॉक्यूमेंट दिया हुआ है. Otherwise, I'll confirm you for 2022. Okay, in the group itself. All right. Yes, ma'am. Okay. Okay, Then, ma'am. yes, thank you so much. Tomorrow again we'll join 7:10 and we'll end 8:40. Last के 5 minutes we'll keep it for question answer. बीच में भी आप पूछो. And Monday to Friday will operate. And please make sure 7:10 को हम लोग करते हैं. मैंने purposely 7:10 रखा है so that you settle up, you get up, you freshen up. So that's how. Ma'am, sorry to interrupt, but can we start at 7:15 because my shift ends at 7, so I need a Oh, couple. is it क्या? Oh, अच्छा 7:15 करना है. हाँ, 7:15 करना है. Okay. if it's possible. हाँ नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है. कुछ- एक्चुअली 7:30 का टाइम था. इवन आई हैव ट्रेनिंग्स ऑफिस तो मैंने 7 o'clock किया. सो आई थिंक ना व्हाट्स योर गुड नेम? Pranjal. प्रांजल. सो प्रांजल Yes. 7:10 को ही करते हैं. इनिशियल 5 minutes आई ऑलवेज रिवाइज द कॉन्सेप्ट. तो आप 7:50 I always keep this open so just to see who is there. Now I know your name. I know once you join it, we'll start with the concepts. So Okay. 7:50 start, just a revision of recap of things because we are doing it regularly. तो हमारे पास में chance है refresh करने का. And then I think 7:15 will start, but the concepts. Okay. Okay, no issues. Perfect. But for others, please make sure कि आप उठ जाओ and we don't delay more than that. And then 8:40 will end up 8:40, 8:35 accordingly. Okay. So thank you so much for joining in and have a good day. Thank you. Thank you, Thank ma'am. you. Thank you, ma'am. Yes. Bye. Bye.